Hello everyone, this question appears in Class 6 NCERT chapter of Understanding Elementary Shapes. This is fourth question of its exercise 5.2. So the question says that what part of a revolution have you turned through if you stand facing? So part A is east and turn clockwise to face north. So firstly हम direction ड्रॉ कर लेंगे. East, west, north and south. East, west, north and south. So east and turn clockwise to face north. So north की तरफ फेस होने के लिए हमें इसे इतना रिवॉल्व करना पड़ेगा. सो हमें फाइंड आउट करना है यू टर्न थ्रू व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन. सो हमारे पास यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है. सो हम 3/4 रेवोल्यूशंस 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन. पार्ट बी इज साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. सो ईस्ट माने के लिए अगेन हमें कितना 1 2 3. सो 3/4 of revolution. And part C is east, west, north and south. West and turn clockwise to face east. West and turn clockwise to face east. So हमें revolution हमारा half of revolution. So that's our final answer. Thank you.